Hi, this is SOnakshi Sinha, and you're watching Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. आपको अंदाजा है कि मुझे मुझे बेहद खुशी है दहाड़ में जिस तरीके की आपको रिस्पांस मिल रहा है, द वे पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क। मुझे तो एक्चुअली अभी फिलहाल यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा डेब्यू फिर से हुआ है। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग एंड यू नो कहते हैं कि ट्राई एंड टिल यू सक्सीड। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, रीमा और जोया आए थे मेरे साथ, बैठकर एक कप कॉफी पिया और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, मतलब सिनॉप्सिस सुनाया। एंड मैंने बिफोर दे गॉट ऑफ द टेबल इन दैट मीटिंग, मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ मैं ये रोल करूंगी और कोई नहीं करेगा। आप स्क्रिप्ट भेज देना, बाद में मैं पढ़ लूंगी, बट जो आपने मुझे सुनाया उसके बेसिस पर आई नीड टू प्ले दिस रोल। सोनाक्षी, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो फरीदून? मैं बहुत बॉम्बे अच्छा आपको हूँ। मिस कर रहा है। नहीं नहीं, मैं बॉम्बे में ही हूँ इस वक्त। बिल्कुल दिलों में हूँ अच्छा। आप लोग जी। ओके, सो सोनाक्षी, पर्सनली आपको आपको अंदाजा है कि मुझे मुझे बेहद खुशी है दहाड़ में जिस तरीके की आपको रिस्पांस मिल रहा है, द वे पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क। एंड व्हेन आई सॉ द सीरीज, मुझे इस चीज़ का एहसास था कि जिस शिद्दत से आपने कोशिश करी है पिछले कुछ सालों में, आई थिंक मुझे लगता है कि वो सारी जो मेहनत है वो एक साथ कल्मिनेट होके वो एक सीरीज में सामने आ गई है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द फैंटास्टिक रिस्पॉन्स दैट यू गेटिंग? एंड इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे तो एक्चुअली अभी फिलहाल यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा डेब्यू फिर से हुआ है। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग एंड कहते हैं कि ट्राई एंड टिल यू सक्सीड। जब मैंने एक फिल्म की थी कॉल्ड अकीरा, विच वाज अ सोलो एक्शन फिल्म दैट आई डिड, मुझे उस वक्त ना उसका मतलब एकदम इतना मजा आया था मुझे कि आई फेल्ट लाइक दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी आई वांट टू सी इन माय करियर। तो इसलिए आई राइट। केप्ट डूइंग फिल्म्स वेयर देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल protagonists, very empowered women who films with some sort of message in them। और मैं करती गई क्योंकि मुझे लगा कि मेरी तरफ से कोई कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे करना है। एंड आई थिंक इट ऑल रियली पेड ऑफ अंटिल आई फाइनली डिड द हार्ड। और जिस तरह से जब ये रोल आया, आई फेल्ट लाइक दिस वाज समथिंग आई वाज रियली रियली वेटिंग फॉर। और इस पूरे टीम के साथ काम करना, द वे रीमा एंड रुचिका ओबरॉय बोथ हैव directed me in this show, they've really brought out the best in me, and I owe it all to them. सो ओवर द इयर्स आपने इतनी सारी फिल्में करी हैं एंड यू बीन पार्ट ऑफ सम रियली ह्यूज बिग फिल्म्स। नाउ अब एक सीरीज़ का आप हिस्सा होती हैं और बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस भी किया है कि आपको सर्टन क्रिटिसिज्म भी आपने फेस किया है। लेकिन अगर हम जैसे बात करें कि जैसे प्रोवर्बियल जो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, लुटेरा आपने पहले किए हुए ना, उसमें इस लेवल का एक फेमिनिज्म को सामने लेके आना कि दैट कि वो उसको साहब बुलाया जाता है, शी इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड लाइक वो एक जो इक्वालिटी को डिमांड करना एंड वो इक्वालिटी और रिस्पेक्ट को नेचुरली ऑर्गेनिकली वो रिसीव करना। सो वो एक बहुत ही कमाल का आई थिंक तजुर्बा था मेरे लिए उसको देखना। सो ये जितने सालों का सब जो क्रिटिसिज्म था, आपने एक झटके में आपने सब साफ करवा दिया। कोशिश वो नहीं थी। कोशिश थी कि एक अच्छा रोल करूं, एक इंस्पायरिंग रोल करूं, एक एम्पावरिंग रोल करूं। और ये काफी सालों से एक्चुअली मैं फॉलो करती आ रही हूँ। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, रीमा और जोया आए थे मेरे साथ, बैठकर एक कप कॉफी पिया और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, मतलब सिनॉप्सिस सुनाया। एंड मैंने बिफोर दे गॉट ऑफ द टेबल इन दैट मीटिंग, मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ मैं ये रोल करूंगी और कोई नहीं करेगा। आप स्क्रिप्ट भेज देना, बाद में मैं पढ़ लूंगी, बट जो आपने मुझे सुनाया उसके बेसिस पर आई नीड टू प्ले दिस रोल बिकॉज इट हैज मूव्ड समथिंग इन मी, इट हैज स्टर्ड समथिंग इन मी। एंड that was it. There was no looking back after that. And बहुत कम actually writers ऐसे होते हैं who actually truly see women as equals. And Rima and Zoya are two of those writers who have achieved that in most of their films and projects that they've done. The way they portray women is very different from what I've seen other people do. I'm not saying nobody else does it. Yes, there are people who do it, but for them, I think it's a prerequisite कि ये एक गिवन है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में या फिल्म में कोई औरत होगी तो वो एक इंस्पायरिंग लेडी होगी, वो और लड़कियों को इंस्पायर करेगी, वो स्ट्रांग होगी,
no matter what profession she's playing, no matter what walk of life she's in, there is something about her that will always stand out. And this was it for me. I think the way Anjali Bhati, they've written the character, it was just something that shook me up. I said, ये character तो play करना ही है. भाटी साहब. Yes. बहुत से आई थिंक मुझे पर्सनली किसी भी जो फिल्म होती है, सीरीज होती है, वो इसमें जो सब टेक्स्ट है वो मुझे बहुत अपील करता है. लाइक दैट समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू इन मैनी टाइम. जो अगर जिसमें यहाँ पर कास्ट की बात है या फिर और भी जो जिस तरीके से औरतों की शादी कर दी जाती है जल्दी, और सिर्फ एक ऑब्सेशन होता है मदर्स का कि बस बेटी की शादी के अलावा कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है, और उसके क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं लड़कियों के ऊपर, किस तरीके के उसके pressures हो सकते हैं, and what steps they can possibly take. For you, when you're listening to a script, what is the importance of a subtext, and what the subject is the film is trying to say, or the series is trying to say? It's important. It should be, you know what they say, right? Art is a reflection of society. Cinema is a reflection of society. So I think when I read the script, ऐसा कुछ नहीं था कि हम देखते नहीं है कि आज नहीं हो रहा है या it's uncommon. So nothing really stood out. These are all things that are very, very prevalent, that are there, that most people face in their daily lives, whether you come from a gaon or you come from a city. So nothing really stood out, but the fact that it was written so beautifully and woven so nicely into the story itself was what was striking to me. कि इतने real तरीके से, ना कि इसे sensationalize करके, ना कि इसे टॉपिक है टू क्रिएट सम कंट्रोवर्सी, उस हिसाब से नहीं किया गया था. इट वाज वोवन वेरी वेरी ब्यूटिफुली, वेरी रियलिस्टिकली इनटू द स्क्रिप्ट इटसेल्फ, व्हिच इज व्हाट आई फाउंड ब्यूटिफुल. सेंसेशनलिज्म के लिए चीजें करना इज नॉट माय सीन. मैं नहीं चाहूंगी कि जस्ट टू मेक अ नॉइज फॉर नो रीजन, but these are certain things that I also really related to in some ways. When you're working in a man's world, how a woman is treated, she's never thought of as, she's never taken seriously, how she has to kind of make her voice heard. There are a lot of things. Ye kuch cheeze I could relate to. There are lots of other women who I've spoken to, journalists, my friends, people from different professions, older than me, younger than me, who have come up with so many other points that they could relate to. For example, शादी करने का pressure, ये कहना बार बार कि उम्र निकली जा रही है, you're not complete until you're actually married. So a lot of women were able to relate to a lot of things. And in fact, one journalist I spoke to she told me, I'm from the Dalit community, and it makes me so proud to see a person like you who is actually from an upper caste family. And I've never even thought of this. ये कभी चर्चा हमारे घर पे हुई भी नहीं थी. And I consider myself to be very lucky to represent us. And we feel so heard that, a person like you, an actor like you, is playing a role like this. So we feel so heard. And that really touched me, So I think this show has struck a chord with a lot of people. And I'm so happy about that. Right. And not only in India, but I think... say for example here in Canada, for example, or say I've been in US several times of late, like people like they brighten up, they literally, their eyes brighten up, and it has reached a lot of people. So do you also find it in a way interesting that how an OTT platform can reach out to so many places, so many countries all across the world? Absolutely. I mean, look how we are connected, yeah. आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है. We are seeing content from all over the world. मैं कितने कोरियन shows देखती हूँ. So now it's no barrier. I mean, there's content from all over. There's great content from all over which everyone is consuming. And I'm really happy कि OTT के जरिए से we are able to make our content reach into every corner of the world. I believe Dahaad released in some 240 countries in one shot. So look at the kind of audience, look at the kind of reach that we have because of this sudden boom in OTT. So I think it's great actually, and it's opened up so many avenues. कितने सारे लोगों को काम कितना बढ़ गया है, कितने सारे लोग, writers, directors, actors,
हर किसी के पास आई थिंक काम है बिकॉज ऑफ दिस, सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. राइट, बिकॉज ऑफ से सबटाइटल्स फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोरियन शोज की बात करा, सो other countries, other people they're consuming who may not even know the language, but just because of the story is so engaging and thrilling in a way, so they can relate to it. Yeah, that's what they say na, content is king. I mean, आप language is really no barrier anymore. आज आप सबटाइटल्स पे देख सकते हैं, आप ऑडियो चेंज करके देख सकते हैं. अगर आप स्टोरी से कनेक्ट करते हैं तो यू एंजॉय इट. सो आई थिंक रियली लैंग्वेज इज नो बार, एंड दैट्स ग्रेट.